Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Iha Nirupama Kavindra, Devopama Munindra, Trailokya Vandaniya, Surabharati Suramya, Yo Bharatasya Mahima, Bhuvi Garjati Garima, Tajjanmadati Punya. प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीता अभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते. One who indulges in ongoing action and is engaged in regular study of the Gita is free and happy in this world and is not bound by karma. Namaskar and good morning everyone. I, Dipali Dave, extend a warm welcome to each and every one of you to the Bharatiya Gyan Samvad distinguished lecture on this auspicious occasion of Gita Jayanti Parva organized by Ganpat University, the Center for Bharatiya Knowledge System and Ancient Wisdom. The university has established GUNI Center for Bharatiya Knowledge System and Ancient Wisdom with aims to percolate the teachings of ancient Bharatiya knowledge system and livelihood pattern to the contemporary generations through various literature like Vedas, Upanishads and Granthas, preserved ancient architectural structures, cultural heritage, agricultural and the other economic activities, defense and security systems, etc. Today, we are blessed to have with us the distinguished guest, Mr. Anantkrishna B, promoter of Sanskrit and Indian culture, Shri Bhagwat Vidyapith, Sola, Ahmedabad. We heartily welcome our another esteemed speaker, Mr. Prasun Kundu, author, coach, consultant and sales and marketing professional, founder of Honesty Solutions, Ahmedabad. We are honored to have with us Dr. Ganpat Bhai Patel, Padma Shri, President and Patron-in-Chief, Ganpat University, and dear Manju Dadi. We are delighted by the presence of Dr. Mahendra Sharma sir, Honorable Pro-Chancellor and Director General, Ganpat University. We also welcome Dr. Saurabh Dave, Pro-Vice Chancellor, Ganpat University, and Dr. Rajendra Shah, Director, Licensing and Compliances, Ganpat University. We heartily welcome all the honorable members of Board of Governors, members of Executive Committee and Trustees, Pro-Vice Chancellors, Deputy Pro-Vice Chancellors, invited guests, Executive Deans, Deans of various institutes, Directors, Principals, Heads, Faculty members, and dear students. Happiness cannot be traveled to be owned, earned, born, or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude. With these lines by Dennis Waitley, we express our sincere gratitude to all. Ganpat University is deeply grateful to its founders, donors, trustees, donors of land, and the Constitution of India for giving the society and the country a great institution based on the philanthropic mission of Vidya Samajotkarshaha, social upliftment through education. The GUNI family further acknowledges the contribution of all its stakeholders, including the Government of India, the Government of Gujarat, all past and present members of the Board of Governors, the Academic Council, the Finance Committee, various bodies of Ganpat University, all its past and present office bearers, partners, staff members, parents, and students. We sincerely thank each individual for their gracious contribution to helping us reach the forefront of social, cultural, and educational initiatives and endeavors for the nation. Today, we gather to celebrate and reflect upon the timeless wisdom contained in the Bhagavad Gita, which is often referred to as the Song of God. As we commemorate Gita Jayanti, let us delve into the verses that continue to guide and inspire people across the world. Tejaha kshama drutiha shocham adraho nati manita bhavanti sampadam devima
अभिजातस्य भारत। इस श्लोक में करुणा और संवेदना के सभी गुणों की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं उजागर हो रही है, जैसे कि क्षमा, फॉरगिवनेस, और धैर्य, पेशेंस। यह दैवी स्वभाव के आदर्शों का वर्णन करता है जो मानवता में करुणा और सहानुभूति की भावना बढ़ाते हैं। We, the GUNI family, firmly believe in Karuna and Samvedana, which is also woven in the GUNI stole. Moreover, these core values are reflected in our GUNI logo, which indicates that GUNI students must have essential skills like hard work, integrity, knowledge, sincerity, leadership, and teamwork. Moving with the agenda, now I would like to request Dr. Morvi Vasavda, Associate Executive Dean, Faculty of Agricultural and Allied Sciences, and Tomoni from BTech Marine Engineering, to welcome our distinguished guest, Shri Anantkrishna Shastri, with a bouquet, memento, and a miniature painting which is prepared by our architect students. Please join me in giving a big round of applause. Thank you, everyone. Now I request Dr. Karpa Gavli Nageshwaran, Principal of Kumud and Bhupesh Institute of Nursing, and Manushi from BTech Marine Engineering, to welcome our another distinguished guest, Mr. Prasun Kundu, with a bouquet, memento, and miniature painting, and a tulsi pot. Thank you, madam. Thank you, sir. Bharat is known for its ancient culture and traditions, which is very rich. And before I proceed further, I would like to show one video which also reflects the Indian tradition, Bharatiya Gyan Parampara Siksha, and our rich culture. Can we have the video on screen, please? Most stories are about lost civilizations. This is about a living one. शुक भाषिणी सुप्ति
you. Is it really mesmerizing? Let me invite Dr. Mahendra Sharma, Pro-Chancellor and Director General of Ganpat University, who has played a pivotal role in shaping the university into what it is today, a center of excellence for education, research, and innovation. With these words, I'd like to invite Dr. Sharma. Please, sir. Thank you, Professor Dipali Dave. Good morning, everyone. We are very much not only proud and privileged that today we are witnessing the start of Bharatiya Gyan Samvad distinguished lecture series on a very pious day of Gita Jayanti, and we are very much fortunate that we have the blessings of eminent personalities on the dais on this great day when we are starting this distinguished lecture series. We are very much privileged and blessed by the presence of our Honorable Patron-in-Chief and President, our beloved Dada, Shri Ganpat Bhai Patel. Thank you, Dada. And knowledge and wisdom is two things he has always talked about. And that's where Ganpat University talks about student first, character must. So it's blended into it. And as Dipali was talking about Samvedana and Karuna, it was reflecting how we are believing and practicing what we think a human should be like, a student should be like. So whatever we are trying to do, we are trying to create an ecosystem driven by value system, and Dada proudly also says it is Dada Dadi culture which is nurturing those value inside this ecosystem. Thank you, Dada, for being there, guiding us and ensuring that the ship moves in the right direction. And this is today, while we are celebrating not only Gita Jayanti, but we are dedicating through the university to the mission of Government of India, Ministry of Education on Bharatiya knowledge system, a very important distinguished lecture series. It is important in the sense because this knowledge is so scattered and it is so diverse that bringing him to one particular forum, bringing it to the textbook, bringing into meaningful knowledge into the classroom, it will take lot of efforts by lot of institutions, lot of organization, pooling together, being a country which is so diversified, having 10,000-year-old civilization, was ravished by different dynasties which came and wiped out certain part of our knowledge system, rejuvenating. So when we are trying to work, when the government is trying to work, it is important that the universities take initiatives on those lines, supporting the government and bringing the right knowledge to the classrooms. We are blessed that we have with us today Shri Anantkrishna Shashtri, who is a promoter of Sanskrit and Indian culture, and he comes, Dada immediately recognized him from his face and recalled his great-grandfather, and he said that he had been to his house in USA, and he feels blessed that today Anant Shastri ji could find time and to share his thoughts on Bhagwat Gita and battle of everyday life with all of us. Thank you, Shastri ji. We feel blessed with your presence. We are equally delighted that we have the presence of Shri Prasun Kundu ji, who is an acclaimed author, coach, consultant, and a professional founder of Honest Solutions. And it was a very short request, and he was tied up with a very important personal event. But Kundu sir made it possible because he has a heart for students and a heart for Ganpat University. And he would be talking to us on management lessons from Bhagwat Gita. Thank you, Kundu sir. And your dict would help us have reflections how we can imbibe practices originating from Gita to make our life and career more meaningful. While we will be hearing these two great personalities today and trying to drive, I must take acknowledgement of the team which has worked very hard to ensure that we institutionalize
this Center for Bharatiya Knowledge System and Ancient Wisdom at Ganpat University. This mission is now led by our Pro Vice Chancellor, Dr. Saurabh Dave. Saurabh Bhai, we are thankful to you. And it is joined by Dr. R.K. Shah, and he would be helping Saurabh Bhai in this mission. But the team which created the fertile ground, Dr. Morvi Pandya, Dr. Professor Sandeep Sisodia ji, Professor Tejara ji, and many like-minded people who were working. Our registrar, Dr. Girish Patel, our Pro Vice Chancellors, Dr. R.K. Patel, Dr. Satyen Parikh, and many professors and others who had thoughts on this and would actually were contributing silently. And that's how we reached this particular point of time where we are starting this lecture series. We express a deep gratitude to each one of you. And while we are celebrating Gita Jayanti, along with the dedication of this important Bharatiya Gyan Samvad distinguished lecture, it is important that we understand why Government of India and why our Honorable Prime Minister wants us to imbibe this Bharatiya knowledge system in our syllabus and our curriculum. As you are fully aware, you saw a video and you could see the architecture. You could see lot of artifacts. That was a metal mirror which was manufactured. And you could see the various cultural aspects, how the life was celebrated. You could see the colors. They were all originating, and they are telling you that everything that you are doing today had a meaning and is related to something. And Gita talks about the same thing. It talks about Bhagwan Krishna said, you focus on the seed. Don't worry about the fruit. You work on the seed. Seed is action. Everything is action and reaction. So it's like we believe in karma, and karma is what? Action and reaction. So whatever we are doing today, if I am standing here and speaking to you today, is a reaction of my past karma, and whatever I am doing will be reflected in as a reaction tomorrow. It's all interlinked, and that's why we believe in the philosophy of Punarjanma. And that's where it's all interlinked. So when we are talking about Gita, you cannot see it as an independent phenomena. It's like when you read Ramayana, Ramayana cannot be understood holistically without reading Mahabharata. Because whatever is happening in Mahabharata is outcome of what has happened in Ramayana. And you would not understand Ramayana and Mahabharata holistically if you don't read Vishnu Purana. Because Ram and Krishna were Vishnu's avatar. You don't understand the full happening around. Because if you look at all the stories and whatever is happening, all the events, is like brewing out of two things. Either it is brewing out of dan or some kind of blessing given by one of the god, or shrap. So there are two things which were leading to all the events. And you don't understand this whole ecosystem of Vishnu Puran, Ramayana and Mahabharata until and unless you read Shiv Puran. And if you read Shiv Puran, the gaps which are there, you will never understand until and unless you read the insecurity of Brahma and his sons in Brahma Purana. So you won't understand what's happening because there is a nature involved, there is a Devi involved. So you have to read Devi Puran. And all these Purans make no sense until and unless you read Vedas. It won't make sense again if you will not understand the monasteries of Buddhism and Jainism. Because Buddhism talks about Shunya and we talk about is Ananta. We talk about is soul, self and God, Brahma. While Buddhism does not believe in either. Jainism talks about soul, does not talk about God. It's a whole ecosystem that you have to understand. I will give you simple examples of how
action and reaction works. In Ramayana, you saw Hanumanji carrying Ram and Lakshman on shoulder to Sugriv. Action happened. The reaction you saw in Mahabharata when Krishna avatar took Hanumanji on top of the chariot, it was neutralized. Action, reaction, balanced. You saw in Ramayana that Ram helped Suryaputra Sugriv kill Indraputra Bali. And that too by a misnomer. The reaction you saw in Mahabharata when Krishna helped Indraputra Arjun killed Suryaputra Karna. Misnomer. Balanced. Action, reaction, balanced. Okay? So, everything that you see is related. You have to understand that whatever you think, your karma is a seed in the forest of karmas. Because you are not alone. Your circumstances, it is said, one of the quotes it said, humans are the child of circumstances. And your circumstances actually decide. So your karma is not alone. You are surrounded by the karmas of others. Ram, when he was told to go on Vanvas, it was Dashrath's karma. But Ram knew that it is coming from the reaction of earlier karmas. He accepted. He had a choice. If you were a Ram in today's modern era, what would you do? You had a choice. You were declared the king. You were next day morning taking oath. Today any politician will miss it. If he is going to swear as a chief minister or a minister tomorrow morning as a prime minister, in the night somebody comes and says, don't go for the swearing. He will say, take him to jail. Find out something to do with this guy. Who is he to tell me that? But he accepted. He accepted. And when he was leaving Ayodhya, everybody came. The whole population came. All gurus came. Family came. Everybody said, राम वापिस चलो, राजा बनो, तुम राजा बनने लायक, तुम्हारा काम राजा बनने का है, तुम कहाँ जा रहे हो? He chose नीति, he chose नीति, he chose Raj Dharma, and he institutionalized dharma by choosing that decision. So his karma was planted, and you saw further reactions brewing. That's why it is said, 1000 वर्ष पर्यंता राज कीनी श्री लक्ष्मी कांता फिर बैकुंठ पधारे राम. सिधारे नहीं, पधारे राम. So, how could he rule 1000 years had he not chosen that? It's all reaction of what you choose and do. Everything is interlinked. And that's where while we will be studying, our Prime Minister wants us to know that. Because we are working on our life. And whatever we will do, we will contribute to the society. Society will contribute to the country. And how are you going to be Vishwa Guru if you are not proud of your knowledge and you don't imbibe in your life? And this is where there is an important facet that we have to understand Bharatiya knowledge system. It is not only about, Bharatiya knowledge system is based on 3 domains, Gyan, Vigyan and Jivan Vigyan. So there are 3 parts which government has talked about. They said you have to explore Bharatiya knowledge system through these 3 filters, and that you have to understand. And this is where, though we are starting with the knowledge series, but we would be eventually offering courses into numerology, astronomy, astrology, architecture, Indian architecture science, Indian civil engineering, Indian management style, we will be teaching. How should be a leader like? In our Hanuman Chalisa,
It says, why Modi is able to win every election? People asked him. Nobody is, Ram Swarup Das ji said, why he is winning all the elections? As a CM, he never lost. As a PM, he is not losing. And every election he will fight. He said he will never lose. In Hanuman Chalisa, it is written, Sab par Ram tapasvi Raja. If Raja is tapasvi, he will never lose. He will do good. And if you have a king who is a tapasvi, how are you going to lose? Tapasvi doesn't mean sannyas liya ho, please. It has qualities of being a tapasvi, ingredients, character of a tapasvi. So that's where it's important. We learn. And he will become a global leader. I tell you, Modi, if he comes again, he is going to lead the world. India will become a Vishwaguru. We will be telling the world what should happen. Your yoga has already become International Yoga Day. Everybody is doing yoga now. So he has made the world sit down, bend and do everything that is possible. So things are going to change big time. We should be proud of our knowledge system. We should imbibe. I will request all the professors, all the students, embrace it with warmth, empathy, and accept our knowledge system. You will flourish and succeed in life. On this note, I welcome all the dignitaries, all the participants today to the important Bharatiya Gyan Samvad distinguished lecture series on Gita Jayanti Parv. Thank you very much. Thank you so much, sir. We'll continue what Sharma sir has said. Let us witness the views of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, on Bhagwat Gita. Can we have the video? साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। Thank you. Now, a visionary leader, an innovator, a philanthropist, and a passionate educator with experience and knowledge, none other than Dr. Ganpat I. Patel, President and Patron-in-Chief, Ganpat University, whom we lovingly call Dada. Throughout his career, Dada has demonstrated an unwavering commitment to excellence, pushing the boundaries of what is possible and inspiring others to do the same. Dada has been recognized for his outstanding achievements, receiving numerous accolades and awards. Apart from being an accomplished professional, Dada has also shown a deep sense of social responsibility. He has actively contributed to various philanthropic initiatives, making a positive impact on society. As a recognition of his noble contribution to the society, the President of India conferred the 4th highest civilian award, Padma Shri, to Dr. Ganpat I. Patel in 2019. Kindly join me in giving a warm round of applause, Dada. Good morning. Namaste to all of you, and on this auspicious day of Gita Jayanti, on the dais, our Pro-Chancellor, Director General of Ganpat University, Dr. Mahendra Sharma,
We just heard the wisdom of Bhagavad Gita from him and from Sri Modi ji. Bhagavad Gita is applicable on a daily life. And I think at Ganpat University, we practice, we are GUNI, we live by the teaching of Bhagavad Gita. I think we are perfectly, sometimes I think that Bhagavad Gita by Lord Krishna and Arjuna, Samvad, was done for the Ganpat University. Because I think I see on the campus, I see on the trees, I see everywhere here, and I think we are the perfect people to teach the world the value of the Bhagavad Gita. So we should continue on that path. Our distinguished speaker of the day, Sri Shashtri ji, like Dr. Sharma had said, Shastri ji's great-grandfather had been to our house in California several times, 55, 60 years ago. And we used to listen to him. Today, I'm anxious to listen to Shastri ji. Thank you, Shastri ji, for being here. Shri Kundu ji, thank you for accepting our invitation. We are anxious to listen to you also. Sharma Sahib talked about karma. You know, in America, as I became successful, my American friend used to tell me, Pat, your karma is good, your karma is good. They didn't even understand what karma is, but it's an international world. People understand that if you do good, good happens to you. Except your karma has to be pure. What is a pure karma? Niswarth. No expectation. Bhagwan Krishna has said in his teaching to Arjuna that your return will be your karma will have the outcome. When we go to temple, we pray Krishna and we ask Krishna for something. We shouldn't expect anything. We should just go for praying. But your karma will have the outcome. But then you cannot expect anything without expectation of the fruit. We should be practicing a good karma. So Sharma Sahib had just talked about that. He talked about knowledge and wisdom. What is the knowledge without wisdom? And if you want a wisdom, study Bhagavad Gita. It says it all. When I was in a high school or primary school, a teacher used to teach us social studies. And we used to have to keep a little book. And every day we had to write what we have done for the Samaj, for the people. Then we have to make some notes that today I took old man to the bathroom, or I helped the poor beggar, I fed him, and we used to get points. I think life is such that if we do good, we will get the points, but we should not expect any points. We will, and that was the beginning of the Bhagavad Gita in my life. And I think I'm so lucky that we, knowingly or unknowingly, we are practicing Bhagavad Gita. Gita's philosophy is like a yoga. If you practice yoga,
whether you are Hindu or Muslim or Christian, you will get benefit. Your body will get benefit. The Bhagavad Gita is the same way. It's not limited to only Hindu. If you practice Bhagavad Gita, you will have a benefit. It's a universal fact. And like Sharma Sahib said, it is also scientific, action and reaction. Physics says so. So, all in all, let's practice yoga. Today, on a Gita Jayanti day, I want to, and I'm also happy that Gujarat government just initiated to teach Bhagavad Gita in the school. That is the greatest thing happened to Gujarat. I think I have been telling Sharma Sahib that in every class we should have philosophy of Bhagavad Gita. I'm not talking about Hindu religion. I'm talking about philosophy, teaching of Bhagavad Gita. And like he said, no matter what you are doing in life, if you follow the rules of the Bhagavad Gita, you will be successful. The teaching of Bhagavad Gita or practicing Bhagavad Gita is the real difference between living versus life. Living, animal also live, but they cannot practice Bhagavad Gita. If you want to live a purposeful life, one must understand the teaching of Bhagavad Gita. It is what Bhagwan Krishna taught to Arjuna in the middle of the fight. It is like learning in the middle of your life. When you are fighting with your life, you must understand that teaching and practice it on an everyday basis. On this occasion, as we celebrate Gita Jayanti today, and we reflect upon the teaching of Bhagavad Gita to Arjuna, I want everybody to practice it for your life, and may the wisdom of Bhagavad Gita inspire all of you in your life and live a purposeful life with compassion and devotion. And with that, I want to have the blessing of Lord Krishna for everyone, and I'm anxious to listen to our guest today. Thank you. Thank you, Dada, for motivating us with your ideas. Today we are very fortunate to have with us our esteemed speaker, Mr. Anantkrishna B, who is a promoter of Sanskrit and Indian culture at Shri Bhagwat Vidyapith, Sola, Ahmedabad. Shashtri is currently pursuing Bachelor of Education B.Ed from Shri Bhagwat Vidyapith Trust B.Ed College. Shashtri completed his higher education to B.A. in Vyakaran and Puran at Shri Vartantu Sanskrit Mahavidyalan in Sanskrit Medium Gurukulam. Let me share a very prominent incident about Shashtri. In 2016, when Anantkrishna Shashtri was appearing for 10th standard, and in the same year, Shri Krishna Shankar Shastriji's Shatabdi Mahotsav had taken place. During that time, after listening to many saints and experiencing the grace of Param Pujya Dadaji, he decided that now I have to give my life to Indian culture, to Vedic civilization, and today he is an expert in Mahabharat, management teachings and Ramayana leadership lessons and so on. Shri Anantkrishna Shastriji was also invited as a guest speaker at the World Hindu Conference organized by Vishwa Hindu Parishad of America at Chicago in September 2018. He was also invited by Jalso radio station to record a podcast on Bhagavad Gita, which is named as Krishna's Manual. This podcast was among the top 5 podcasts of the year on Jalsa Music Channel. Shri Anantkrishna ji has received Bhagwat Ratna Award from the government in the 6th National Conference on
Indian Vedic culture and astrology held at Jabalpur for contribution in the upliftment of Vedic culture. I proudly invite Shri Anantkrishna Ji to share his insights on the Bhagavad Gita and the battle of everyday life. Please. ॐ मूर्खं करोति विद्वांसं नास्तिकं चास्तिकं मुदा यत्कार्यं तमहं वन्दे कृष्णशङ्करशास्त्रिणम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. First of all, I'll bow down to Lord Narayan and Narottam Arjunji, as today it is their day, today it is Gita Jayanti, and because of their grace, we are able to experience this pure bliss all together. Then I would request all of you to please clap for our main person today, that is Ganpat Bhai Patel. Please clap for him. Not few days ago, but since childhood itself, whenever I used to visit temples, I wanted Ganeshji, I was telling him that when will you give your darshan in reality? And today, and the coincidence is that Ganeshji is considered as the god of knowledge and wisdom, and Ganpatji himself focuses on that values, and we can see that in his educational success. I feel privileged to share the stage with Mr. Prasun Kundu ji, who is an expert in management and who has worked with many other great companies and is now also sharing his views based on Bhagwat Gita. I also thank, congratulate, and feel blessed to share the stage with all the other dignitaries present on the stage, to all the hosts and everybody else. So once again, good morning to all the students. એકાદશીનો ઉપવાસ કર્યો છે? તો બોલો ને બાપા, good morning. Today is Gita Jayanti, and Gita is considered as the scripture of youth. And if we youth won't be confident or joyful enough, then what's the use of this program? Good morning, everyone. Yeah, that's the great spirit. I also bow down to all the teachers, faculty members, and other trustees present over here. So, today it is Margashirsh Shukla Ekadashi or Gita Jayanti. On this day, more than 5,000 years ago, the Mahabharata war had started, and before the war had begun,
Krishna had imparted the knowledge to Arjunji on this specific tithi or Hindu date. And the war had ended on Margshirsh Krishna Amavasya, the 18-day war. In our Sanatan culture, there are 4 main scriptures. The short introduction was given by the previous speaker himself, but let me just shed some more light on that. Then, which are the 4 scriptures? Veda Shri Krishna Vakyani Vyasa Sutrani Chaivahi Samadhibhasha Vyasasya Pramanam Tacchatushtayam. In our Sanatan culture, there are 4 main scriptures. So, 4 Vedas are considered into one section. Then, Shri Krishna Vakyani, that is Bhagwat Gita, the song which was sung by Krishna himself. Then, Brahma Sutra or Vedantic scripture. And the 4th one is Srimad Bhagavata Mahapuranam. These are the 4 main pillars of Sanatan culture. Before I begin discussing on Bhagavad Gita, I myself as a youth want to discuss few things which will definitely help this institution in succeeding on their new educational path. So basically, our culture has great values. There are 4 main values: Dharma, Arth, Kam and Moksha. But as a Sanskrit student, I am not criticizing anybody, but I am just throwing the light on the problems and how you can improve beforehand. So in our culture, there are 4 main principles or values: Dharma, Arth, Kam, Moksha. But what had happened in the previous era, or what is prevailing sometimes in the society, in Hindu families, is that the parents or some other people focus more on the topic of moksha. That is the main fault which does not include, which is not able to include all the youth like me or students of my age. That is where we lack. Gita, it's a youthful scripture. It's a scripture which teaches dharma, artha, kam and moksha all together. And how it's a youthful scripture? I am just 22 and I can see some young students over here also. As young kids, we have to fight daily. We are faced with challenges each and every day. In Bhagavad Gita, there is this youth called Arjun and an experienced person, Krishna. Arjun, because of dejection, the effect of dejection, he tells that I won't fight, I'll just go and reside in the forest. But Krishna over there highlights the youthfulness. Stand up and fight. This is what is real Hinduism is. This is what the ultimate value of life is. So if we focus on these values, we will be able to achieve success in learning all these scriptures. Now in Hinduism, you won't believe
there are so many diverse subjects and diverse books, engineering books, scientific books, economic books, political books, and every other books. I really respect our Ganpat ji's vision about spirituality and human well-being, but the thing is where sometimes we lack is we focus on the spiritual side. It has a lesser value. We need to focus on these things also. That is how we will succeed. So, as the chancellors and the head person and the trustees, teachers are sitting over here, I would also like to help on the researching on those different scriptures. I've been doing that since many years. And even I would like to introduce you all to all those scriptures, which has different various things. Few examples. As today, if we look at, as the automobile engineering students are also over here, so I'll just tell one thing, that today, if we look at the airlines have double-decker planes, but in previous times, there used to be, in the engineering era of Sanatan culture I'm talking about, the engineering era, there used to be planes or flights which had 21 different floors. That was the ultimate engineering expertise of Sanatan culture. And that Vaimanik Shastra of Bharadwaj Rishi is still available today. This is one example. Another example is, that book is in my bag itself only. Another example is Mahabharat, the best. The biggest secret of Mahabharat is that whatever is mentioned in Mahabharat prevails in the outside world. Whatever is not does not prevail. Mahabharat has 1 lakh shloks, and it is been divided into 6 different books so that one can dive into their own subjects. And the 5th book is known as the Shanti Parva. In Shanti Parva, the discussion takes place between Yudhishthir, the eldest Pandav brother, and Bhishmaji, where both of them discuss about finance, financial planning, institutional planning, then tax systems, then scientific values, science systems, different science streams, and what not. It has knowledge about architecture also. I am just highlighting few, but there are around 18,000 shloks on this diverse subjects itself. So just imagine the depth of that beautiful deep ocean. How much, I'm telling you, if one reads that Pancham Khand or Shanti Parva, your MBA has been finished. You won't have to do and apply for another degree. It is that much powerful. As previous speakers were telling that it has ground level knowledge. That is the real ground level knowledge which I wanted to highlight. So this is the speciality. So if we focus on such subjects also, based on a humanitarian aspect, then we will surely achieve loads of success. Now, coming back to Bhagavad Gita, the battle. Bhagavad Gita, it is considered as the heart of Mahabharatam. Mahabharata, as I said previously, 1 lakh shloks. And Bhagavad Gita comes in
the middle of Mahabharata. Now my topic is the battle of everyday life. There are many shloks regarding that. There are many values also regarding that. The first thing which is required for a battle is Atma Krupa. That is the support of your self. Now I'll discuss about Gita, which is the main subject. Atma Krupa. Atmeva yatmano bandhu ratmeva ripuratmanaha. Our self is our best friend and our self is our main enemy. So to win any war, first of all, we ourselves need to support our own self. That is the first thing. Now, as the educational institution is here, and the educational values which can help you achieve success and which can help you win war, I'll tell about that. So Krishna tells about Guru Shishya Parampara also. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. I'll give the example of Arjunji over here. How he used to win wars. So during Draupadi's Swayamvar ceremony, all the kings and all the warriors from the whole world, I would say, had come to attend the Swayamvar ceremony. But why was only Arjun able to win that ceremony? A big question mark stands over there. Why only Arjun? Why nobody else? Because as the bow was lying on the table, Arjunji first came near the bow. He bowed down with both his hands to the bow, did the parikrama of that bow, then took the permission of that bow, remembered his teacher, and then focused on hitting the fish mechanism. That's how he won the war. Other warriors, what they used to do? They used to come directly and just lift the bow. That is the difference, that is the main difference between Arjun, his success, and others' failures. This is how we win the war. Now, another thing. After the Mahabharata war finishes, Ashwathama, okay, so basically Arjun's main teacher was Dronacharya. Dronacharya's son's name was Ashwathama and his student's name was Arjun. So Ashwathama was with Kaurav army, and when Ashwathama left the Brahmastra arrow on the Pandav army, Arjun also left the Brahmastra arrow. But Ashwathama was requested to take his Brahmastra arrow back. But Ashwathama replied that I am so sorry, I know how to release the Brahmastra arrow, but I don't know how to take it back. But Arjun, he knew both ways, how to hit the Brahmastra arrow and how to take the Brahmastra arrow back. Why? We feel like, how is it possible? How did Dronacharya got inclined so much towards Arjun? Why was he so much inclined that he didn't even pass this bit of knowledge even to his own son, his blood, the person who is having blood relation? Because of the surrenderance. So the warrior needs to have surrenderance towards the teacher, towards the weapon, towards the basic values.
This is the winning attitude. So first one has to surrender also. So tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. So first, when the three main qualities which are required are surrenderance towards the scripture, hard work, and discipleness towards the teacher. As soon as these three things come up according to Gita, one will definitely gain lots of knowledge and be extremely successful. Then, talking about success, in the 18th chapter, there is a shlok regarding successfulness. The number is 14th shlok. 5 major factors are required for achieving success in any war, in any project, or in any other stream. Which are those 5 factors? Adhishthanam tatha karta karanam cha pruthagvidam vividascha pruthak cheshta daivam chaivatra panchamam. So 5 main factors in any field which are required are adhishthan, that is environment. Karta means the doer. Karanam, resources. Pruthak cheshta, that means proper planning. And 5th is, that is prayer, luck or blessings. These 5 main factors contribute towards the success of any project. Now coming about the comparison factor which the youth face today. And that shlok which is quite related with this university also, that is swakarmanatam abhyarchya siddhim vindati manavaha. What does it mean simply? Everyone is gifted with unique qualities. Each and every one of us. And that's how we'll be able to be the future Elon Musk or the future Steve Jobs, by following our uniqueness. So first we have to recognize our uniqueness by the grace of our teacher, and then we have to achieve, we have to work hard towards that and achieve success, and that's how we have to contribute towards the upliftment of society. And that is what is quite related with Vidyaya Samajotkarashaha, which means that what is the ultimate value of gaining knowledge, that is uplifting the society. This is the main thing. And education should not only be about earning money, but it should also be about contributing, which our main person is also doing over here. Then the last shlok of Bhagavad Gita, it also sheds a very great light upon success. It is Yatra Yogeshwaraha Krishno Yatra Partho Dhanurdharaha Tatra Shrir Vijayo Bhutir Dhruvanetir Matir Mama. Wherever there is Yogeshwar Krishna, which means Krishna means blessings, luck, prayer, and wherever there is Parth, so the actual meaning of Parth is Purusharth, your hard work. So in simpler terms, prayer plus hard work, Krishna plus Arjun, hard work plus prayer is equal to Tatra, Shri, that is wealth, Vijay, victory, Vibhuti, which means gloriousness. Now comes the most important thing, Dhruvniti. Dhruvniti means permanent success, not temporary success. Dhruvniti, permanent success. So hard work plus prayer, Krishna and Arjun both go hand in hand, and that is how we achieve success. And the last example of leadership quality which is being mentioned in Gita is Mukta Sango Naham Vadi Dhrutyutsaha Samanvitaha
Siddhya siddhyor nirvikarah karta sattvika uchyate. The qualities of a good leader, those of you who lead in the future, and those who are leading, we can also take their examples. Mukta Sango Nahamvadi, which means the one who is unbiased. Nahamvadi, which means the one who is non-egoistic. Who is Dhairyashil, the one who is patient. And in bad times, Dhrutyutsaha Samanvitaha. In bad times, that leader motivates everybody. Siddhya siddhyor nirvikaraha. And whenever that person achieves success, that person does not be egoistic. And whenever that person achieves failure, that person does not go into depression. In today's terms, Karta Sattvika Uchyate. These are the qualities of a great leader. This is how Gita throws light on the youthfulness, on achieving success, on winning battle of everyday life. So once again, the example of this is the recent example. Modi ji's example was talked about. Recently on 19th November, India lost the World Cup match. And all Indians, including me, everyone was disappointed for quite a few days. But what is the quality of a true leader? When team members had lost, when they had gone in the dressing room, Modi ji as a leader, he had confidently gifted the trophy to the Australian captain and team, but later on he had gone straight away to the Indian dressing room and he had motivated all the team members to fight back again and lift the trophy. Same was done by him during the failed Chandrayaan mission, and now we have achieved success in the Chandrayaan mission also. This is the example of a true leader, and when I saw the video of Modi ji, I could literally relate that he must be revising a lot, taking a lot of reference from Mahabharata and Bhagwat Gita. So these are basic winning qualities, important things regarding war and about life. So there are many such things which can be discussed from Gita, but I will just stop over here, and I will once again thank to the main person, Mr. Ganpat Bhai Patel, his wife, to all the members present over here, to all the chancellors, dignitaries, trustees, teachers, students, and those of you who are listening through the online link. I would really thank all of them, and thank you so much once again. Thank you so much, Shastri ji, for sharing your insights about Bhagavad Gita. We every day feel like we are on a battle and we have a war to win, and Bhagavad Gita is the one solution. Thank you so much. I request Dada and Saurabh sir to present the statement of gratitude to Shastri ji. कृतज्ञता की अभिव्यक्ति. Please give him a big round of applause, everyone. Thank you so much. As Shastri ji has very important commitment, so he is leaving. Thank you so much
for coming here and sharing your experiences with us. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Bhagavad Gita is a more than 5,000 year old dialogue between a seeker and guru, and is a manual for leading a holistic life. Let me introduce another respected speaker who believes in what mind can conceive, man can achieve. Is none other than Mr. Prasun Kundu. He has more than 3 decades of experience as an author, coach, consultant, founder of Honest Solution. Mr. Prasun Kundu has written 2 books, Discover the Arjuna in You and the Bhagavad Gita Kahani Swarup, which is also available in Hindi language. So has worked with organizations like Nestle India Limited, Reliance Retail, Idea Cellular and McCormick. He has conducted various corporate and individual trainings based on Bhagavad Gita. His signature program is Discover the Arjuna in You, has been delivered in multiple organizations like Adani, Reliance and Apple to name a few. Mr. Kundu has also conducted various training sessions on soft skills and behavioral training in corporates. He has also launched a certificate program on sales and marketing with Ahmedabad Management Association. Sir also promotes Bhagavad Gita through his YouTube channel. Prasun Kundu Gita Chanting is enchanting Bhagavad Gita chanting tutorials. Without further ado, please join me in giving a warm round of applause to Mr. Prasun Kundu. नमस्कार. Am I audible? मैं सुनाई दे रहा हूँ? दिखाई दे रहा हूँ? एक्चुअली क्या है, मेरे को ऐसे एक जगह पे खड़े होके बात करने की आदत नहीं है. सेल्स में था ना इतने साल, मगर मैनेज करेंगे. चलिए पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं. भगवत गीता पे बात करेंगे तो अगर आपको प्रार्थना आती हो तो मेरे साथ करिएगा, अगर नहीं आती हो तो सुनिएगा. उसके बाद आरंभ करते हैं. 3 बार ओम चैंट करते हैं. ओम तो सबको आता ही होगा.
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरि ओम। So thank you very much everyone who has invited me here, and I'll save the thanks for the last. And so let me start with a question. How many of you have a copy of the Bhagavad Gita? Raise your hands. Raise your hands. All of you, in any form, digital form, moti, patli, choti, badi, whatever language, almost everyone, isn't it? Okay. Now my second question is, how many of you have read it? कितनों ने पढ़ी है? आधे क्यों हो गए भैया? सबके पास जब है तो आधों ने क्यों पढ़ी है? Sorry? Sorry, someone said something. बोलिए बोलिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा. वन साइडेड होगा तो मजा नहीं आएगा. ऐसे बोलिए कि आवाज मेरे तक भी आए. Okay, my third question. How many of you have understood it? Okay, my last question. How many of you implement its learnings in your daily life? Okay. सुनाई दे रहा है? मानते ही हैं कि ये बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है, ये तो हम सब मानते ही होंगे, नहीं तो क्यों है हर जगह? अब जैसे हवा है, हवा हर जगह है ना, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है ना कि हम सांस ले सकें. तो हर घर में भगवत गीता है, लेकिन पढ़ा केवल 50% लोगों ने है, समझा तो केवल एक ही बंदे ने हाथ उठाया था. ठीक है, और हम इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं. ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोदी साहब तो अभी कहीं जाते भी है ना, तो ही ओनली गिफ्ट्स अ भगवत गीता. आर यू गाइस अवेयर? आपको पता है ये बात कि जब से मोदी साहब आए हैं, उनके पहले किसी फॉरेन डिग्निटरी को ताजमहल दिया जाता था एज ए मोमेंटो, व्हिच हैज बीन चेंज्ड टू द भगवत गीता. Isn't it? Now, जब देश के प्रधान सेवक मानते हैं और वो देते हैं, और वो तो कहीं भी खड़े होते हैं, भगवत गीता का एक श्लोक तो उनका आ ही जाता है, एक श्लोक तो आ ही जाता है. तो ऐसा क्यों है? तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि वो जो लाल कपड़े में या सफेद कपड़े में लपेट के भगवत गीता को भगवान जी के रूम में रखा हुआ है ना, उसको केवल प्रणाम करके जब काम करने जाते हैं तो यहाँ पहुंच जाते हैं,
अगर खोल के पढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? तो उस लाल कपड़े या सफेद कपड़े या जिस रंग के कपड़े से भी आपने लपेट के ढक के रखा हुआ है भगवत गीता को, उसको निकालिए और उसको पढ़िए और उसका अनुसरण करिए। केवल 30 मिनट का समय दिया गया है मेरे को और बोला गया यू कैन एक्सटेंड एट मैक्स अप टू 40 मिनट्स। ओके, सो आई ट्राई एंड डू जस्टिस टू द टाइम, इसलिए मैंने थैंक्स नहीं बोला। तो थोड़ा भगवत गीता पे ज्यादा चर्चा करेंगे। नाउ जितने भी बड़े बड़े लोग हुए सब में एक चीज कॉमन है, स्पेशली इंडिया और आजकल तो बाहर भी, कि वो भगवत गीता उन्होंने जरूर पढ़ी हुई है। महात्मा गांधी को जानते सब? ऑल ऑफ अस नो महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी यूज्ड टू रीड द भगवत गीता। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको मैं वाकया बताता हूं। जब महात्मा गांधी अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस करने के लिए लंदन गए थे, तब लंदन में उनको वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ढूंढने के बाद उनको एक थियोसॉफिकल सोसाइटी में जाके एक रेस्टोरेंट मिला जहां पे ही वाज एबल टू हैव सम वेजिटेरियन फूड। तो वहां पे जितने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग थे, वहां पे वो लोग सब मिलते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। उस समय भगवत गीता महात्मा गांधी पढ़ रहे थे इंग्लिश में, जो कि एरविन आर्नोल्ड ने लिखी थी और जिसका नाम था द सॉन्ग सेलेस्टियल। और ऑलकुट ब्रदर्स बोल के दो जर्मनी के ब्रदर भाई थे, वो लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे मूल संस्कृत टेक्स्ट में। और उनको एक किसी श्लोक में कोई शंका हुई तो उन्होंने कहा ये गांधी तो इंडियन है, इसको पता होगा, चलो इसके पास जाके पूछते हैं। तो गांधी जी के पास आए पूछने के लिए कि इसका अर्थ क्या है। और गांधी जी हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी, दैट वाज द मोस्ट शेमफुल डे ऑफ माय लाइफ। दो जर्मन ब्रदर्स मूल संस्कृत टेक्स्ट में भगवत गीता पढ़ रहे हैं और मैं अनुवाद की हुई भगवत गीता अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं और मैं उनको बता नहीं पाया कि उसका मीनिंग क्या है। एंड दैट इज द डे आई टुक ऑन माई सेल्फ दैट आई रीड द भगवत गीता इन द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट एंड ब्रिंग इट आउट टू द वर्ल्ड। एंड ही डिड इट। ऑल ऑफ अस आर अवेयर, इजंट इट? ऑल ऑफ अस आर अवेयर। और वो ये बोलते थे कि आजादी की लड़ाई में किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में मैं भगवत गीता को एट रैंडम खोलता हूं, कोई भी श्लोक जो मैं पढ़ता हूं मुझे उस सिचुएशन का आंसर मिल जाता है। दैट इज द पावर ऑफ द भगवत गीता माय फ्रेंड्स, दैट इज द पावर ऑफ द भगवत गीता। उसके लिए हमको उस लाल और सफेद कपड़े से निकाल के खोलना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा भगवत गीता को। Yes, no? How many of you agree? How many of you make a pledge that I'll read the Bhagavad Gita? एक और हमने कुछ शोध किया था, we did a research कि ऐसा क्यों होता है, भगवत गीता सबके घर पे है लेकिन लोग पढ़ते क्यों नहीं है? बड़ा आश्चर्य है ना, पढ़ते क्यों नहीं है? तो उसके दो कारण हैं। एक तो वो संस्कृत में है, the original thing is in the original text is संस्कृत, and अब जब स्कूल और कॉलेज से संस्कृत चला गया, this is a very good initiative that the government is taking and also this university, and I congratulate the founders and the management committee that Indian knowledge system is coming back here, and I'm sure it'll be stated to its glory that it deserves. Okay. तो एक तो संस्कृत में है और हम लोगों को संस्कृत में हमारा हाथ तंग है, हिंदी में हाथ तंग है, संस्कृत की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा ये है कि या तो हम कोई ट्रांसलेशन उठाते हैं। अब जब मैं कोई ट्रांसलेशन उठाता हूं वो किसी भी भाषा में लिखा गया हो, तो वो ट्रांसलेशन लिखने वाले के दृष्टिकोण से भगवत गीता का वाचन है उसमें। वो शायद इधर हैं और मैं शायद इधर हूं, वो यहां से बोल रहे हैं, मैं यहां से समझने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ देर में आई गिव अप बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव दैट इज गेटिंग बिल्ट from someone who is much more knowledgeable or who is much more experienced than I am, isn't it? थोड़े दिनों में हम रख देते हैं, फिर बोलते हैं अभी मेरा टाइम नहीं आया, मेरा टाइम आएगा। हाँ, वो गाना है ना, कौन सा गाना है, अपन का टाइम आएगा। हम उस टाइम का वेट कर रहे हैं
ठीक है, इट इज समथिंग लाइक ए खजाना जो मेरे नीचे गड़ा हुआ है, मुझे पता है खजाना है, लेकिन उस खजाने को यूज कैसे करना है वो मुझे नहीं पता। और मैं क्या कहता हूं, मेरा टाइम आएगा तब मैं इसको यूज करूंगा या करूंगी। Isn't it? So time, my friends, has come. जैसा दादाजी ने बोला, मेरी औकात नहीं मैं आपका नाम ले सकूं सर, तो मैं आपको दादाजी बोल के ही एड्रेस करूंगा। जैसे उन्होंने बोला कि आज ही शायद अखबार में है, गुजरात में 6th to 8th तक भगवत गीता कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है, एंड ऑल ऑफ अस कैन हैव ए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। ऑल ऑफ अस शुड बी प्राउड, ऑल ऑफ अस शुड बी प्राउड कि भगवत गीता, और हम लोग अब धीरे धीरे वी आर फीलिंग प्राउड। जब दादाजी आप यूएस में रहे होंगे तब वो टाइम ऐसा था जहां पे इंडियंस यूज्ड टू बी लुक्ड डाउन अपॉन, इजंट इट? एंड पिछले 10 साल में जो चेंज आया है, अब मेरा बेटा यूएस में, बाय द वे, सी द इंसिडेंस हाउ इट चेंजेस। जब दादाजी थे इंडियंस यूज्ड टू बी लुक्ड डाउन अपॉन, नाउ इंडियंस आर बीइंग लुक्ड अप एट। That is the difference that has come in the last 10 years. And जो जिसके कारण ने डिफरेंस आया वो खुद भगवत गीता चलते हैं, मोदी साहब। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ द भगवत गीता। मैं इतनी भूमिका इसीलिए बांध रहा हूं जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सकूं कि भगवत गीता तो पढ़नी है हमको। एक प्रॉमिस हम सब करेंगे कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना सीखना है तो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख लीजिएगा। पढ़ना तो हम सिखा ही रहे हैं, उसमें ट्यूटोरियल्स है, पढ़ना सीखिए। और हमसे लोग बोलते हैं कि कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप ना सब जिस्ट बना के फक से मुंह में डाल देना हमारे कैप्सूल और हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा होता है? ऐसा होता है? दिस इज अ यूनिवर्सिटी, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। आप ग्रेजुएट हो तो कितने साल में होते हैं? कितने साल लगते हैं? अरे सर आपने स्कूलिंग भी तो किया है ना ग्रेजुएट होने के लिए, नहीं किया? कितने साल लगते हैं ग्रेजुएट होने में? 17 साल से 20 साल, isn't it? और मैं कहता हूं 20 मिनट में भगवत गीता घुसा दो। इज इट पॉसिबल? हिंदी में तो कहावत है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है ना? जब हम स्कूल में आते हैं हम कैसे पढ़ते हैं? ABCD पहले पढ़ाते हैं ना, फिर बोलते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, उसके बाद वर्ड बनाया, उसके बाद सेंटेंस बनाया, उसके बाद हमने पैराग्राफ बनाया, है ना? अपठित गद्यांश आता था ना, फिर पैराग्राफ बनाया, फिर हमने स्टोरी लिखी। ये दिस इज अ प्रोसेस दैट हैज टू गो थ्रू। ओके, इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। सो वी विल हैव टू इन्वेस्ट टाइम, वी ऑल ऑफ अस विल हैव टू इन्वेस्ट टाइम, isn't it? So let's look at a glance. So how many shloks are there in the Bhagavad Gita? में कितने श्लोक हैं? कितने अध्याय हैं? किसने कितने बोले हैं? फटाफट। कितने कैरेक्टर्स हैं? कितने कैरेक्टर्स हैं भगवत गीता में? फटाफट फटाफट। 4 4। कौन कौन से? कौन कौन? वेरी गुड। 700 श्लोक में से किसने कितने बोले? फटाफट। एनीवन? ये कौन आ गया जबरदस्ती हमको, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है हमको। दुर्योधन नहीं है भगवत गीता में, दुर्योधन नहीं है। इन द सेंस जो दुर्योधन बोल रहा है वो संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, है ना? ओके, सो भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने 574 बोले 700 में से, अर्जुन ने बोले 84, 84। संजय जिसने जो सुना रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, उन्होंने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। नाउ किसकी तबीयत खराब होती है महाभारत के युद्ध के मैदान में? अर्जुन। तो डॉक्टर के पास गए भगवान श्री कृष्ण,
isn't it? So भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है ना, और अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। पूछने वाले ने कितनी बार बोला? 84, और बताने वाले ने 574. The first management lesson that if you have to learn, then you will have to listen. और मैं दादाजी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला गणपत यूनिवर्सिटी इज हाथी, हमारा एम्ब्लेम इज हाथी. ओके, एंड हाथी के सबसे बड़े कान किसके होते हैं? क्या किस लिए होते हैं वो? बिकॉज इट लिसन्स. ओके, तो सब फर्स्ट मैनेजमेंट लेसन इज if you have to learn something new, you have to listen. Okay, और 574, जब अगर कोई listen तो ठीक है, 574 सुनने के लिए पेशेंस भी चाहिए ना. वो पेशेंस कहां से आएगा? वो पेशेंस आएगा when you surrender yourself to someone. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्. दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन सेज कि मैं आपका शिष्य, आपकी शरण में आया हूं, मुझे आप बताओ, क्योंकि मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, मेरी चेतना चली गई है, मैं आई एम टोटली डिल्यूडेड. व्हाट इज टू बी डन इन दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन? पहले अध्याय में 47 श्लोक तक भगवान कुछ नहीं बोलते, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक तक भगवान कुछ नहीं बोलते, 48 तक तो भगवान केवल सुन रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, केवल सुन रहे हैं. तो सेकंड मैनेजमेंट लेसन इज, अगर आपसे कोई कुछ पूछने आता है तो गिव हिम अ और हर अ पेशेंट हियरिंग. क्योंकि जो भी आपसे कुछ पूछने आएगा ना, या आपसे कोई प्रश्न कर रहा है, उसके दिमाग में कोई ना कोई उत्तर तो बैठा ही हुआ है. Everyone will come with a preconceived notion or a preconceived answer, and if you don't give a patient hearing and you start giving your judgmental decisions, it may or may not reverberate with that particular person. Yes, no? अर्जुन जब थक गया ना, पूरा बोल बोल के बोल, गांडीवम श्रमसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, सब न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः, सब कुछ बोल के जब थक गया, बैठ गया, उसके बाद भगवान ने बोलना शुरू किया. ओके, सो दैट इज द सेकंड मैनेजमेंट लेसन. नाउ a very interesting fact I'll give you. Let me see if this is working. No, not a problem. I'll give a very interesting fact. पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं? अर्जुन ने कितने बोले? 21, isn't it? ये क्या है? अर्जुन विषाद योग है, द योग ऑफ अर्जुन डिल्यूजन. और सुबह दादाजी कह रहे थे कि शायद शर्मा जी कह रहे थे कि, दादाजी कह रहे थे शायद कि भगवत गीता इज लाइक योग. ठीक है, हर अध्याय का नाम योग है, बाय द वे. अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ऐसे योग है सारे, ऑल. ओके, तो पहले अध्याय में कितने? 21, जहां पे अर्जुन इज सेइंग कि उसने युद्ध क्यों नहीं, हमसे ना हो पाएगा, उसकी सारी दलीलें दे रहा है, हमसे ना हो पाएगा. 21. 11वां अध्याय विच इज द विश्व रूप दर्शन योग, जहां पे भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, उसमें 33 बोले अर्जुन ने. कितने? 33. दिख रहा है आपको? तो अर्जुन पूरा विस्मय से देख रहा है और भगवान से कह रहा है, यानी बता रहा है कि वर्णन कर रहा है उनके विश्व रूप का, उनके विश्व रूप का वर्णन कर रहा है. वहां पे 33 कितने हुए? 33 प्लस 21 कितना हुआ? 54. और 73rd श्लोक ऑफ 18th चैप्टर, जिसमें अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव. So he makes a confession that I am back to my senses and I am now ready to fight this war again. ठीक है, वो एक वो ले लेते हैं, तो कितना? 54 + 1 55.
55, 84 माइनस 55 कितना हुआ? जल्दी, क्विक मैथ्स, 29। सो पूरे भगवत गीता में केवल 29 प्रश्न किए हैं अर्जुन ने, जो सारे 29 प्रश्न अपने होते हैं किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में। और ये अगर हमने जान लिए, उसके उत्तर भगवान ने दिए हुए हैं। एंड दैट इज व्हाई भगवत गीता इज कॉल्ड द मैनुअल फॉर लाइफ। दादाजी ने बोला था मैनुअल फॉर लाइफ, वो बोल रहे थे, मोदी साहब बोल रहे थे इट्स अ मैनुअल फॉर लाइफ। आई कॉल इट द, नॉट द मैनुअल, आई कॉल इट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर लाइफ। एसओपी तो डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। इदं तुते गुह्यतमं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। वो बोलते हैं कि मैंने तेरे को द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट दे दिया ज्ञान, अत्यंत गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया अर्जुन। नाउ फिर नहीं बोलते कि तू अब उठ युद्ध कर, वो क्या बोलते हैं? नाउ पॉन्डर ओवर इट कंप्लीटली, विमृश्य, इसके ऊपर सोच विचार कर, अशेषेण, कंप्लीटली। फिर क्या बोलते हैं? यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरी इच्छा वो कर। ठीक है? सो इट इज नॉट अ एसओपी, इट इज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर लाइफ। सो व्हेन यू स्टक, अब हम जो भी हम कोई गैजेट खरीदते हैं, कोई भी, ये देखिए मैडम जैसे फोन पे लगी हुई है ना, ये जो फोन है ना, इसके साथ भी एक मैनुअल आता है ना, कि हम इसके स्पेक्स देखते हैं ना, आजकल क्या स्पेक्स देखे आते हैं। सो दैट इज व्हाट द मैनुअल ऑफ द फोन ना, कितने जीबी रैम है, ठीक है, कितना उसकी मेमोरी है, ठीक है, कितना आजकल तो क्या, कौन सा वाला क्या चलता है सॉफ्टवेयर, तो क्या बोलते हैं उसको, एंड्रॉइड, कौन सा वर्जन है, ऑक्सीजन है, बीटा, जो भी है, जो भी चल रहा है, ठीक है। हम वो देखने के बाद वी मेक अ डिसीजन टू बाय, इजंट इट? यस, नो? एंड व्हेन वी बाय आल्सो देयर इज इंस्ट्रक्शन मैनुअल दैट कम्स। हमने गाड़ी खरीदी, फिर आएगा 10,000 के बाद पहली सर्विस, 20,000 के बाद दूसरी सर्विस, 30,000 के बाद तीसरी सर्विस जो कि फ्री है, उसके बाद गाड़ी सर्विस नहीं होती, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट देन 30,000 तक हमको पता है। फिर अगर कुछ हो गया, इंडिकेटर नहीं जल रहा है, देन वी ओपन द मैनुअल, इजंट इट? इजंट इट? ये जो यहाँ पे जो लाइट्स लगी हैं, ये जो यहाँ पे ये जो छवि आ रही है, ये जो है, ऑल दीज गैजेट्स वर इंस्टॉल्ड यूजिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। यस, नो? Isn't it? And the instruction manual is important so that these work at their best capacities. Yes, no? Yes, no? So जब हम किसी बाहरी चीज को इंस्टॉल करना होता है, तब हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल की हेल्प लेते हैं। और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमारे लाइफ का दिया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने, उसको तो हम पढ़ते नहीं है, खुद को मैंने इंस्टॉल किया नहीं है, और मैं दुनिया को इंस्टॉल कर रहा हूं। सोसाइटी का फैब्रिक चेंज कैसे होगा सर? सो माय रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आप सबसे विनम्र निवेदन है, भगवत गीता पढ़िए, अपने आप को सही तरीके इंस्टॉल कर लीजिए, दुनिया हो जाएगी इंस्टॉल, डोंट वरी, डोंट वरी। द लीस्ट आई कैन डू इज टू इंस्टॉल माई सेल्फ करेक्टली। यस, नो? Yes, no? The least I can do, isn't it? चले आगे, चलना है? 30 मिनट हो गया है, हाँ? I can take some more time? दादाजी ने बोल दिया, तो मैं ले लेता हूँ सर, धन्यवाद। Okay, so what we are going to discuss is भगवत गीता के लिए 30 मिनट तो यानी is like, अगर मैं केवल इंट्रोडक्शन देता तो शायद 30 मिनट, जैसे अभी निकल गया, और भी मेरे को बहुत कुछ बोलने का, बोल नहीं रहा, ठीक है। बट एक कॉन्सेप्ट लेंगे, केवल एक कॉन्सेप्ट, ओके, जो मैनेजमेंट के, अभी तक मैंने आपको 3 बता दिए मैनेजमेंट के, हाउ इट कैन बी इन द इम्प्लीमेंटेड इन मैनेजमेंट। केवल एक कॉन्सेप्ट लेंगे विच इज अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड विच आई फाइंड, जो कि मुझे लगता है अपनी निजी जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में
और अपने रिलेशनशिप्स में भी, फैमिली लाइफ में भी इट कैन वर्क, डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। भगवान श्री कृष्ण ने 18वां अध्याय जो कि समरी है पूरे भगवत गीता का, उसमें ये बात कही है। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही। कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म, इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन। ओके, कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। जब मैं चैंट कर रहा था तो कैसा लग रहा था? जब मैं चैंट कर रहा था, आप लोग चैंट करेंगे मेरे साथ? करेंगे सब? सो लेट्स क्रिएट सम एनर्जी इन द रूम। ठीक है, लेट्स क्रिएट सम एनर्जी इन द रूम। ये 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है। मैं एक चरण करूंगा चैंट, मेरे पीछे आप करिएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करेंगे। ठीक है, डन? यज्ञ दान तपः कर्म, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा एनर्जी आनी चाहिए, एनर्जी एनर्जी। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ये यज्ञ दान तपः, ये पूरे भगवत गीता में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग उसमें आता है। मगर हमको ये पता होना चाहिए जब हम भगवत गीता पढ़ें, ये यज्ञ दान तपः का मतलब क्या है। ओके, सो यज्ञ का मतलब होता है वर्शिप और सैक्रिफाइस। ओके, जब जैसे हम यज्ञ की बात करते हैं ना, तो पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? आग जल रही है, जजमान बैठे हैं, यजमान जजमान जो भी के लिए बैठे हुए हैं, और मंत्र पढ़े जा रहे हैं और आहुति दी जा रही है ना। ओम अग्नेय स्वाहा अग्नेय इदम नामम। जैसे कल ही हमने भगवत गीता हवन किया था, गीता हवन किया था कल। तो वहां पे कैसे हर श्लोक के बाद जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय इदम नामम। ठीक है, वो हर उसके बाद वो हवन करते हैं ना, तो हम आहुति देते हैं। सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड यज्ञ। दान हम कैसे समझते हैं? दान, चैरिटी, चैरिटी तो हम कैसे समझते हैं? धन दान, धन का दान। ठीक है, वस्तु दान, श्रम दान, वस्त्र दान, व्हाटएवर। सो दान से हम क्या समझते हैं? विद्या दान, जो हम किसी को दें, है ना। और वो हम किसी को वही दे सकते हैं जो मेरा हो, है ना। मैं इनसे लेके उनको नहीं दे सकता ना, दे सकता हूं लेकिन वो दान नहीं होगा। ओके, सो दान एंड तपह। तपह का मतलब क्या होता है? हम क्या समझते हैं तप का मतलब? किसी ने बोला वो हनुमान चालीसा में तपस्वी राजा, है ना। तप, तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब हम समझते हैं कि कोई हिमालय में बेयर बॉडीड बैठ के पहाड़ की चोटी पे, है ना। या फिर हम लोग कैसे समझते हैं कि मैं मंडे को फास्ट करूंगा या करूंगी, मंडे फास्ट कर लिया, और जब मंडे को मैं फास्ट करता हूं उसी दिन घर में वो बनता है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और फिर मैं क्या बोलता हूं? अच्छा मैं फास्ट मैं तप कर रहा हूं तप, लेकिन क्या बोलता हूं? उठा के रखना, कल खाऊंगा। That's how we understand. Okay. But let's understand कि भगवत गीता में किस तरह से बोल, यानी उसका रेलेवेंस क्या है। सो यज्ञ का मतलब है हमारी लाइफ में, ठीक है, हमारी लाइफ में एनीथिंग दैट वी डू, वी सेट ए गोल। यस नो, यस नो। अब जैसे आज का प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये सौरभ दवे साहब ने कुछ एक गोल रखा होगा कि आज हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम होगा, ये स्पीकर्स होंगे और इतने सारे लोग जुड़े, वॉट एवर। सो वी ऑलवेज सेट ए गोल, ठीक है, एंड वंस वी सेट दैट गोल, फिर हम उसके प्रोसेस बनाते हैं टू अचीव दैट गोल। यस नो,
हम उसके लिए रिसोर्सेस एलोकेट करते हैं टू रीच दैट गोल, यस नो, है ना? तो ये जो वर्क लाइफ वर्शिप जो है ना वो यज्ञ से आया है, बाय द वे। ओके, सो ये जो रिसोर्सेज है, मेरे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? मेरे पास रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स होंगे, रॉ मटेरियल रिसोर्स होगा, ठीक है, मनी होगा, इज वन ऑफ द, टाइम इज वन ऑफ द रिसोर्स। ओके, सो ऑल दिस रिसोर्सेज को जब मैं मोबिलाइज करता हूं ना टुवर्ड्स दैट गोल, इज कॉल्ड एज यज्ञ। To mobilize all resources towards that goal is called as yajna. And tapah का पता मतलब क्या होता है? मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम tapah. The single-minded focus and concentration of the mind and the senses on the task at hand is called as tapah. So when I'm mobilizing all these resources towards that goal, I am focused, single pointed focus and concentration on the goal. And when I do that, जब मैं वो करता हूं तो जो भी distractions आते हैं ना, distractions, I don't pay heed to them. That increases my productivity. Yes, no? Yes, no? अभी शास्त्री जी ने बात की थी, इंडिया वो मैच हारा, मैं तो स्टेडियम में था उस दिन। ओके, मैं स्टेडियम में था एंड आई लव टू बी इन दिस स्टेडियम बिकॉज राहुल द्रविड़ इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। तो आ जाते पासेस, हम चले जाते देखने। बट आपने कभी देखा है, अगर आप में से कितने लोग गए स्टेडियम? कोई भी मैच देखने गए? स्टेडियम गए हम? तो स्टेडियम में अगर आप गए हो इंडिया का मैच देखने खासकर, ठीक है, दो ही टी शर्ट दिखाई देती है, 18 नंबर और 45, विराट एंड रोहित, है ना? दो ही टी शर्ट दिखाई देती है अभी आज करंट डेट में। पहले तो 10 दिखाई देती थी तेंदुलकर जब खेलते थे, बट अब वो विराट कोहली इज, शुभमन गिल आउट हुआ है, विराट कोहली विल गो टू बैट। द मोमेंट शुभमन गिल गेट्स आउट तो क्राउड में दुख नहीं है, खुशी हो जाती है, खुश। व्हाई? नाउ विराट इज गोइंग टू कम। And Virat, when he comes in, the whole stadium is like Kohli, Kohli, Kohli. Does that affect Virat? No, it does not. He calmly walks to the pitch because single pointed focus and concentration is his role in the team. That is tapah. लोग बोलते सर हमें मेडिटेशन सिखाओ, मैंने कहा वो है मेडिटेशन, जाके देख लो। 1,30,000 आदमी बैठा हुआ है और आदमी खेल रहा है, दैट इज मेडिटेशन। जितनी एक्सटर्नल आवाज है ना, जय श्री राम, मैं तो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में भी था, जय श्री राम एंड देन यू हैव टू प्ले, दैट्स tapah, that's tapah. So mobilization of resources towards the goal is yajna, and single pointed focus and concentration to mobilize it towards the goal and ensure it reaches the goal is tapah. So when I do that, क्या होता है अगर मैं mobilize करता हूँ and तो क्या होने वाला है? Will I achieve the goal? Yes, no? Yes, no? थोड़ा तेज, yes, no? शायद, because output मेरे हाथ में नहीं है। The output is not in my hands. Output मेरे हाथ में है नहीं, so I may achieve that goal. ठीक है? और आजकल के पार्लेंस से बोलते हैं उसको सक्सेस, I may succeed in achieving that goal. Yes, no? And if I achieve that goal, no one can say that I've done it alone. I myself done it. No one can say it. सुबह से हम सुन रहे हैं, दादाजी ने भी प्रोफेसर्स को, ये डीन को, शर्मा जी को और दवे साहब को बोला, ये अपनी टीम को बोलेंगे। So we always attribute it to people who have helped us reach here. Yes, no? That is called generosity. है ना? कोई फिल्म फेयर अवार्ड जीता, क्या बोलता है? ये मेरी माँ के लिए, जिनके वजह वो मेरे कुत्ते के लिए। Generosity. So when I reach that goal, I have to attribute it to people who have helped me achieve this success. ये जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनकी मम्मियों ने कितना सैक्रिफाइस किया है। रात को 2 बजे सो रहे हैं, मम्मी फिर 2 बजे सोने आ रही है, मम्मी 3 बजे उठा देना या 4 बजे उठा देना, कल मेरा एग्जाम है। खुद नहीं उठ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई है,
मम्मी उठ के आ रही है रात को, बेटा कुछ खाना है, कुछ पीना है. So there is an ecosystem that works for us. The siblings who have helped you by not disturbing you when you are studying. Your father, जिसने provide किया सारा finances and वो support rock solid. So we have to be generous in acknowledging this. That is called as dana. So if I have to achieve something in life, I will have to mobilize all my resources, single pointed focus and concentration, yagna tapa, and if I achieve that goal, I should be generously attributing it to people जिन लोगों ने मेरी मदद की मुझे वहां पहुंचने के लिए. Yes, no? सिंपल फंडा, ठीक है, सिंपल फंडा. लाइफ में सबको यूज करना है. मजे की बात है हम उसको अपने स्वार्थ के हिसाब से यूज करते हैं. So all the success stories we have till now, we would have followed yagna dana tapaha knowingly or unknowingly. Knowingly or unknowingly. What we are saying is, what Bhagwat Gita says is, live your life by design and not by default. This is called life by design. But ये यहाँ खत्म नहीं होता है. छठे में भगवान क्या बोलते हैं, हाउ एंड व्हाई. चैंट करेंगे मेरे साथ. एतान यपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. So he says, etani apitu karmani, even these karmas, which karmas? Which karma? Yagna, dana, tapaha. Etani apitu karmani is to be practiced how? Sangha. Sangha is attachment. Tyaktva is to give up. Phal. So, to give up your attachment to the fruit. Sangan tyaktva phalani cha. अब कोई ये पूछेगा कि अगर मेरे को फल की कामना करनी ही नहीं है तो मैंने करना ही क्यों है कर्म. यस नो. पीछे सबसे ज्यादा लोग हंस रहे हैं. हाँ हाँ. सो he says because these are your कर्तव्य कर्म. कर्तव्य नीति में पार्थ. इसके आगे भी बोलते नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः. Embodied man cannot give up karma indefinitely. Not possible. यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्य अभिधीयते. अभिधीयते बोल रहे हैं भगवान. इसके आगे बोलेंगे. लेकिन he says that it is not in your hand. So कर्तव्य, these are obligatory duties. Obligatory कर्तव्य कर्म है. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है, in any organization, if you think that this is right as the think tank of the organization, at times you will have to use your hierarchical power, isn't it? ये तो करना है. दादाजी का मुझे सुबह बता रहे थे जब इन्होंने यहाँ पे 300 एकड़ लैंड लेनी शुरू की तो लोग बोले पागल हो गए हैं. But he must have used that hierarchical power कि मुझे चाहिए, क्योंकि तब समझ में नहीं आता ना लोगों को. अब लोग बोल सकते हैं ना खड़े होके, तब कितनों को समझ में आया था. तब तो अकेले चले थे ना. लोगों ने क्या बोला था, गुजराती में तो एक वर्ड है ना गांडा, है ना, पागल. तब तो यही बोलते हैं. उनको विजन ही नहीं है देखने का. सो कर्तव्य नीति में पार्थ भगवान ये खत्म नहीं करते. बोलते हैं निश्चितम, दिस इज माय सर्टेन व्यू, मतम उत्तमम, एंड दैट इज बेस्ट. Period. No questions asked. The best part about Bhagavad Gita is it tells us what to do. It tells us how to do. And it also tells us why to do it. The best part of the Bhagavad Gita. Nishchitam matam uttamam is what he says. So, yagna dana tapah is the way of life. ये हमको करना ही पड़ेगा. और पावनानि मनीषिणाम, if we have to get the status of a wise person. Manishis are wise people. Wise people, and then even these are to be done by giving up of our attachment to the fruit of action. Attachment to the fruit of action.
because these are our obligatory duties. In any case, result मेरे हाथ में है नहीं. निश्चितम matam uttamam. This is my certain view, and this is the best, is what Bhagwan says. Now, let me ask you a question. So let me give you one thing. So if I have to get success, if I have to achieve success, then I'll have to practice what? W. W is what? Worship or sacrifice. This is called as yajna. A is what? Austerity or penance. This is called tapaha. And G is what? Generosity or charity. This is called as dana. So if I have to succeed in something and get that swag in my life, I have to practice yajna, dana and tapaha. Okay? So now let me ask you one question. What is the ultimate goal of life? What is the ultimate goal of life? Sorry, who said? Happiness, आनंद, सुख, कुछ भी नाम ले लीजिए. हम जो भी करते हैं, हम सुख के लिए करते हैं. Yes, no? ऐसा कोई है जो सुख के लिए नहीं करता है यहाँ पे? कुछ लोग होंगे हमको जबरदस्ती यहाँ बिठा के रखा है, कोई सुख नहीं है इसमें. वो that's a different story. फालतू सुनवा रहे हैं, तब से बोर किए जा रहे हैं. ऐसे भी लोग होंगे. अरे ऐसे वाले उठ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. You can leave the room, not a problem. But then whatever we do in life, we do it for happiness. Yes, no? So I'll give. मैं सेल्स का आदमी हूँ ना, जब तक मैंने कोई इनपुट नहीं दिया तो मुझे मजा नहीं आता. So let's look at. So what is happiness? So happiness equals action. So happiness कैसे आएगा? जब मैं कुछ करूंगा तभी मैं आएगी ना happiness. कि बैठा रहूंगा तो आ जाएगी, बैठा रहूंगा तो नींद आएगी, happiness नहीं आएगी. Action. Yes, no? Action. So anything that I do it for happiness. Directly proportional. My actions are directly proportional to happiness. Yes, no? मगर इसमें ना एक कैच है कि मेरे एक्शन जो मैं करता हूं ना, वो एक्सपेक्टेशन के साथ करता हूं. Yes, no? Yes, no? अब मैं एक्सपेक्टेशन किसके कर रहा हूं? जो कि आउटपुट है, जो मेरे हाथ में नहीं है. एक्शन किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना. हम मैनेजमेंट में कंपनी से बोलते हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. ओके, जो मेरे हाथ में. एक्शन किसके हाथ में? मेरे हाथ में. एक्सपेक्टेशन किसकी है? जो मेरे हाथ में नहीं है. वो जो गोल जो हमने सेट किया वो होगा नहीं होगा मेरे हाथ में है नहीं ना. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्. भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में, बोलते हैं आगे जाके, बोलते हैं द फिफ्थ फैक्टर इज दैवम विच विल डिसाइड द आउटपुट. तेरे हाथ में नहीं है अर्जुन, और वो हमारे हाथ में नहीं है. किसी के हाथ में है आउटपुट. अगर किसी के हाथ में आउटपुट होता तो कोविड क्यों आया होता? किसी के हाथ में आउटपुट होता तो वो यहां क्यों बैठा होता अपनी इच्छा के अगेंस्ट में? Yes, no? So output is not in my hands. Okay. Now now action is what? Input. Expectation of the output is the external factor. Yes, no? So life में जितना मैं डिनोमिनेटर को, एक्सपेक्टेशन को कम करता जाऊंगा, उतनी मेरी खुशी बढ़ती चली जाएगी. जितना मैं इसको कम करूंगा. So if I make it zero, theoretically if I make it zero, I will be in a state of bliss all the time. Yes, no? Am I communicating? Am I communicating? So life में क्यों, और होता क्या है कि हम लोग इतने जड़ित हैं ना, इतने ज्यादा जड़ित हैं मटेरियल वर्ल्ड में, कि अगर मैं ये पूछूं कि अहमदाबाद का सबसे सक्सेसफुल आदमी कौन है या औरत कौन है, तो क्या जवाब आएगा? हाँ, किसी ने बोला भी. हाँ, वेल्दी पर्सन.
which is not right, absolutely which is not right. Which is not right. Success cannot be attributed to wealth. It cannot. Why can't we say कि जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज का धन है, या जिसके पास सबसे ज्यादा विजडम है, या जो सबसे ज्यादा काइंड है, या जो सबसे ज्यादा चैरिटी करता है, वो क्यों नहीं बोलते हम? And because of this orientation of ours, our expectation is always towards the output. तो हम जो भी करते हैं ना, मेरा क्या, इसमें मुझे क्या मिलेगा? यस नो, ठीक है। इसको जब हम डिनोमिनेटर को जब हम कम करते चले जाएंगे, हमारे एक्शन स्मूथ होते चले जाएंगे, we will be able to move on faster, will not get stuck. और जो हैप्पीनेस कोशेंट है ना, will keep on going up and up. तो ये हैप्पी, कोई बोलता है ना मैं बहुत दुखी हूं, you know which is, दादाजी को तो पता होगा, which is the highest paid profession in America? Anyone? Psychiatrist. कौन जाते पता उनके पास, जिनका ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है? दादाजी सही कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। जिनका एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा है, किसी का तो इतना बड़ा है कि ना न्यूमरेटर से ज्यादा है। फिर वही बात, आपका क्या है? हम दूसरों की बात नहीं कर रहे। भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे, हम दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम अपने आप को इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं करेक्टली, ठीक है। आपका कैसा, आप वो देखिएगा बस। डू ए लिटमस टेस्ट ऑन योर सेल्फ एवरी टाइम। फिर वो आगे एक्सपेक्टेशन, वाइफ का है, देखो जीता जाता एग्जाम्पल, देखिए आप। और एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा उनसे होती है जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सो इन लाइफ बड़ा सिंपल सा मंत्र दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, ओके। और ये इतना सुंदर मंत्र है कि जो भी हम करें, हम अपने लिए करें और उसको भूल जाएं। नेकी कर दरिया में डाल, बोलते हैं ना, कीप ऑन डूइंग योर एक्शन बिकॉज दैट्स योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। आपको करना तो पड़ेगा, करना तो। बोलते हैं भगवान अर्जुन को, बेटा भया द्रणादु परतम मम संते त्वम महारथा। लोग बोलेंगे डर के भाग गया युद्ध छोड़ के, वो ये नहीं बोलेंगे अर्जुन बिकेम ए पीस मैसेंजर, नो, दिल से डर के भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। फिर क्या बोलते लास्ट में 18वें अध्याय में, तू नहीं करेगा स्वभाव जेन कौनते, बोलते तू अगर अभी ये युद्ध नहीं करेगा तो वापस आके ये युद्ध तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तू क्षत्रिय है। लेकिन अभी नहीं करेगा और बाद में आके करेगा, बाद में कोई पूछेगा नहीं तेरे को। You will not get the same result if you do it afterwards. इंग्लिश में कहावत है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यहीं से है। सारी कहावतें बता दूंगा, सब भगवत गीता से आई हैं, डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवत गीता से आया नहीं। ओके, डू आई हैव 5 more minutes? Sorry? Half an hour? Thank you so much. That is the power of the Bhagavad Gita. So all of us can clap for the Bhagavad Gita. So that's the power of the Bhagavad Gita. So before I leave, मैं आपको 5 श्लोक बताऊंगा, 5 श्लोक, और ये भी बताऊंगा कि आपकी जिंदगी में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आप किसी भी सिचुएशन में हो, इनका जाप कर लेना बॉस, चैंट कर लेना बस, एंड यू विल बी बेल्ड आउट ऑफ द। पूरी भगवत गीता के 700 में से 5 ही लेके आया हूं, ठीक है, ओनली 5 श्लोक, और ये मेरे जाने के बाद बाय हार्ट कर लीजिएगा। और किसी को अगर दिक्कत हो तो दबे साहब मेरा नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो पढ़ने में तो मेरे से पूछ लीजिएगा, वैसे मेरे YouTube चैनल पे भी सीख सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये 5 श्लोक हमको आने चाहिए। डू वी मेक ए प्रॉमिस? ओके, गुड। सो पहला है टू टेक चार्ज। सो फर्स्ट इज व्हाट, हमने वो क्या देखा था, एक्शन।
Action is important. Happiness is directly related to action. So action के लिए I need to take charge. As simple as that. मैं बैठ रहा हूँ, कोई आके मुझे बोलेगा बॉस करना है, नहीं होगा, ठीक है? So take charge. चलिए साथ में चैंट करेंगे, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। शास्त्री जी ने इसकी चर्चा की थी, पता नहीं कितने लोगों ने पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ. इफ यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, you will have to do it. Okay, you will have to do it, because it says utharet, that to lift something. How to lift? Lift what? Lift what? ये क्या बोले? आत्मनम आत्मनम, self by the self. So lift self by the self. Utharet atmanam atmanam. So I will only decide whether I have to elevate myself. फिर क्या बोल रहे हैं? ना आत्मनम विषादयेत. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब है कि and only I will decide whether to degrade myself. आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः. बंधु इज फ्रेंड, मित्र, क्योंकि मैं ही अपना सबसे बड़ा मित्र हूं. आत्मैव रिपुरात्मनः, और मैं ही सबसे बड़ा शत्रु हूं. So मुझे ही डिसाइड करना है whether I elevate myself or I degrade myself. So any position or any situation that you are in, stop blaming the world. You are responsible for that. Take charge. Take charge of your life. Stop blaming people, event, circumstances, situation. परिस्थिति को देख के मन स्थिति अगर आपकी बदल गई तो वो मन स्थिति स्थिर नहीं है. एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति की दो अलग मनस्थितियां देखने को मिलती हैं. Yes, no? In the same situation, given the same input, two people will react differently. Yes, no? पढ़ाने वाला एक है, 40 स्टूडेंट हैं, फर्स्ट एक ही आता है. आइडियली 40 के एक साथ पढ़ाने वाला तो एक ही है, सोर्स तो एक ही है, सिलेबस भी सेम है. आपने मेरे दुखती नव पे हाथ रख दिया. मार्केटिंग. Okay, so are we going to take charge of ourselves? कभी भी लाइफ में आज के बाद से यहां से निकलने के बाद अगर लगे इसके कारण हुआ, बॉस ये वाला श्लोक पहले चैंट कर लेना. उद्धरेदात्मनात्मानम. मैं आई नीड टू लुक. मेरे को क्या करना है? यू विल सी द वर्ल्ड इज चेंजिंग फॉर यू. द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू. ओके. सेकेंड इज लीडरशिप का सबसे बड़ा मंत्र. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. यद्यदाचरति श्रेष्ठः. थोड़ा तेज. भूख लग रही है क्या? एम आई कमिंग बिटवीन यू एंड योर लंच? ऐसा होता है कई बार, भूख लगते थे, ये क्या है? ये आगे वाले बैठ के बोले चलो चलो, हमारी तो सोच ही नहीं रहा कोई. चलो थोड़ा सब मिल गया, चलो 5 मिनट बात कर लेना यार, लंच कोई बात नहीं, लंच तो रोज ही करते हैं. यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. ये श्लोक पता है क्या बोलता है? यत यत आचरति श्रेष्ठ. जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष का आचरण होगा. यत यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष का आचरण होगा, तत्त देवेतरो जना, वैसे वैसे लोग बिहेव करते हैं.
सयत प्रमाणं कुरुते, जैसे जैसे वो प्रमाण देता जाएगा लोग उस पर अनुसरण करते चले जाएंगे। मोदी साहब आए, उन्होंने बोला स्वच्छ भारत, पहले तो किसी को समझ में नहीं आया। अभी आप देखिएगा, अगर आप किसी मार्केट प्लेस में हैं और आपने कोई वो चॉकलेट का रैपर फाड़ा, तो अगर आपको डस्टबिन नहीं मिला तो आप यूजुअली उसको अपनी जेब में रख लेते हैं, कहीं डस्टबिन मिलेगा, नहीं तो फिर घर जाके फेंक देंगे। ऐसा कितने लोग करते हैं? जो नहीं करते हो कर लेना भैया। हम किसी के घर जाते हैं ना, तो बच्चों को देख के क्या बोलते हैं? ये बाप पे गया, ये माँ पे गई है, बोलते हैं, बोलते हैं ना। वाई? बिकॉज दैट किड इज आइडलाइजिंग ईदर ऑफ द पेरेंट। जो पेरेंट उसके हिसाब से उसको आचरण कर रहा है, वो उसी को फॉलो करता है। ये घर की बात हो गई। और मैनेजमेंट में एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज फ्रॉम द टॉप। तो जैसे दादा का विजन होगा वैसे गणपत यूनिवर्सिटी बनेगी, इसमें कोई संशय है ही नहीं। And it is by design and not by default. It's by design, it's not by default. Okay, so इसीलिए अपने आचरण पे ध्यान दीजिए, लोग फॉलो कर रहे हैं बॉस, you are being watched. ठीक है? So leave a legacy that people can follow. है ना? What is the difference between a leader and a manager? हाँ? So लीडर को लोग फॉलो करते हैं, मैनेजर की सुननी पड़ती है जब तक वो मैनेजर है। सिंपल, क्योंकि उसके पास वो हायरार्किकल पावर है। सिंपल है। यस नो? सो लीडरशिप का सबसे बड़ा मंत्र है, इफ यू वांट पीपल टू फॉलो यू, डू व्हाट यू वांट देम टू फॉलो। बच्चों को बोलते रहो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आप बैठ के पढ़ो अपने आप। डू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सेकंड, थर्ड, बहुत बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती है, फीलिंग डाउन एंड आउट होता है। एवरीथिंग इज अगेंस्ट मी यार, कोई मुझे समझता ही नहीं है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। होता है? यस नो? होता है। तब ये वाला श्लोक बोलेंगे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। So when we are feeling down and out is because of the weightage that we give to the output, to the external factors. Things, beings, places, events and situations. Yes? No? Okay. So what Bhagwan is saying? Bhagwan is saying ananyas chintayantu mam. जो अनन्य भक्ति में मेरे में भक्ति रखता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम मेरे में रखता है। ये जना जो ये लोग जो मेरे को उपासना करते हैं अनन्य भक्ति से, दैट मेरे हाथ में तो आउटपुट है नहीं, जिसके हाथ में बॉस यू टेक केयर, दैट इज अनन्य भक्ति। यस नो? दैट आई लीव द आउटपुट to someone who has created me, and I think that someone who has created me has better plans for me. जब मुझे जन्म दिया है तो मेरे लिए कुछ प्लान करके दिया है ना, फिर मैं इतनी चिंता किस बात की करता हूं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम। रोजमर्रा की चीजें तो तुमको वैसे ही मिल जाएगी, रोटी कपड़ा एंड मकान is ensured. अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो तेरे पास नहीं है वो भी दे दूंगा तेरे को, is what he says. LIC का पता है किसी को? LIC के एम्ब्लेम में नीचे लिखा हुआ है योगक्षेमं वहाम्यहम्।
तो LIC क्या बोल रहा है? इफ यू इन्वेस्ट इन मी आई विल गिव यू रिटर्न्स दैट यू डोंट इवन इमेजिन. यस नो? भगवान क्या कह रहे हैं? इन्वेस्ट इन मी आई विल गिव यू रिजल्ट्स यू डोंट इवन इमेजिन. सॉरी, डेस्टिनी जो मेरे हाथ में नहीं है, एटलीस्ट उनके हाथ में तो छोड़ दूं, लेकिन मैं वो भी पकड़े रहता हूं, ये भी पकड़े रहता हूं. फिर मैं जाता हूं साइकियाट्रिस्ट, किसके पास? वो क्या नाम लिया था आपने? साइको एनाल. नाम भी आजकल नए नए आ गए. हम जब छोटे थे बोलते पागलों के डॉक्टर हैं, नाम भी नए नए आ गए. ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं. अरे क्या मैप कर रहा है भाई? क्या है? भगवत गीता पढ़ लो, श्लोक 54 to 72, चैप्टर सेकंड पढ़ना ही चाहिए सबको. स्थित प्रज्ञ 54 to 72, चैप्टर 2 पढ़ लीजिएगा, मगर ये वाले 5 पहले याद कर लेना. ओके, सो बिफोर मील्स, अभी सबको खाना खाने की इच्छा हो रही है ना, भूख लगी हुई है. सो बिफोर मील्स ये वाला चैंट करना है. एनीथिंग दैट यू पुट इन योर माउथ, बिफोर दैट चैंट दिस श्लोक. ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना. सो इन जस्ट वो बोल रहे एवरीथिंग इज ब्रह्म. एवरीथिंग ब्रह्म है ना, ब्रह्म. किसी ने शंकराचार्य जी को पूछा कि हमारे ये जो इतने सारे ग्रंथ हैं उनका निचोड़ क्या है? मैं तो पढ़ नहीं सकता इतने सारे ग्रंथ, है ना. तो वो बोलते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में बताता हूं. यदुक्तम यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, हमारे कोटि कोटि ग्रंथ में क्या लिखा है? यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः. और ब्रह्म और ये जो जीव जिसके थ्रू यू आर एक्सपीरियंसिंग द ब्रह्म, both are not different. The only thing is one comes with expiry date, another is there. To experience physics में आपने तो काफी उसमें काम किया ना, आपने जो labs बनवा रहे हैं, तो for that engine to come to life it needs a body, isn't it? It needs a housing, no? तो जीवो ब्रह्मैव न परः, everything is Brahma, everything is Brahma. So whenever we are eating, be grateful that the nature is satisfying the nature. Okay? Last, and this is the charam shlok of the Bhagavad Gita. ये श्लोक तो सबको याद होना ही चाहिए. 18th chapter 66 श्लोक. Bhagavad Gita is said to be the निचोड़ of Veda and Upanishads. ब्रह्म विद्या एंड योग शास्त्र का निचोड़ है भगवत गीता. और भगवत गीता का निचोड़ ये एक श्लोक है. भगवत गीता का निचोड़. चलिए सब थोड़ा सा तेज बोलेंगे, ठीक है? दिस इज द जिस्ट ऑफ द भगवत गीता. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. So it says that leave everything and take my refuge. सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ. कहने का मतलब ये है, जब भी हम लोग क्या करते हैं आजकल ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक नया वो टर्म आया है, मल्टीटास्किंग. और उसने सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है. ओके, भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ये बोल रहे हैं एक बार में तुम एक ही चीज कर सकते हो बस. वो एक चीज कर लो, अच्छी तरह कर लो, बाकी लीव एवरीथिंग टू मी. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. फिर क्या बोल रहे हैं? अहं त्वा सर्व पापेभ्य, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्ति, मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से मुक्ति दे दूंगा. मा शुचः, डोंट ग्रीव, डोंट वरी. So focus on only time management. सिखाते ना आप लोग यहाँ पे बच्चों को, सिखाते टाइम मैनेजमेंट, है ना? आप क्या बोलते हैं? स्टार्ट विद द एज एंड नॉट विद द सीज.
ABCD ये आपने बनाया जो टू डू, उसमें स्टार्ट विद द एज. अब एम ही वो सी वाला मत लिख देना भैया, ठीक है. सो स्टार्ट विद द एज. सो यू डू वन थिंग एट अ टाइम, लीव द रेस्ट, डोंट वरी, विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी, डोंट वरी. वो विराट कोहली खेलने जा रहा है, वो सोचे अरे अभी मेरी वो अनुष्का शर्मा अभी मैटरनिटी होम में, शी इज गोइंग टू डिलीवर, टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी. हम घर से आ रहे हैं, एसी काम नहीं कर रहा, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी. बट यू विल हैव टू डिसाइड वेदर इट इज प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 और 4. So once I have done 1, 2, 3 which are more of priority than that AC, after the four happens, this will happen, don't worry. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग क्या करते हैं, पांचों एक साथ करते हैं, एक भी नहीं होता. अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ. यस नो. चलिए, आई एम डन. आई होप भगवत गीता कौन कौन उठाएगा आज के बाद से और पढ़ेगा, उठाते तो सब और पढ़ेगा, ठीक है, और पढ़ेगा और समझेगा. ओके, चलिए, हमने ओपनिंग प्रेयर्स की थी, सो वी विल क्लोज आल्सो द सेशन विथ अ प्रेयर. लेट्स क्लोज द आईज एंड हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो. Let's close our eyes and say this prayer. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. नारायणायेति समर्पयामि. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. ओम हरि ओम. Thank you very much for a wonderful, enlightening session, and you have given us very life learning lessons, sir. Thank you so much. It was really mesmerizing interaction, not a session, but interaction with you. We are very happy to have you here on this auspicious day. Thank you so much, sir. I request Dada and Saurabh sir to please come on a stage and let us felicitate our distinguished guest with a statement of gratitude as a token of love, sir. We would like to present to you Kritaknata ki Abhivyakti. Thank you so much. It is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to all those who have contributed to the success of this event. I'd like to express my
Deepest gratitude to our esteemed guest, Mr. Anantkrishna Ji and Mr. Prasun Kundu ji, for giving valuable life learning lessons to us. I'm also grateful to the President and Patron-in-Chief of Ganpat University, Shri Ganpat Bhai Patel and Manju Dadi, Director General and Pro-Chancellor, Pro-Vice Chancellors, Executive Registrar, Deputy Pro-Vice Chancellors, Executive Deans, Associate Executive Deans, Deans of various institutes and principals, heads, faculty members, and of course, dear students, thank you so much for being here. Let us carry the wisdom of Bhagavad Gita in our hearts. May the teachings of Lord Krishna inspire us to lead a life of purpose, righteousness, and compassion. I request you all to please rise for Ganpat University song. गणपत विद्यानगर तणा अमे तेज पुंज अविनाशी आधन्य धराना संतानो अमे सरस्वती अनुरागी आधन्य धराना संतानो अमे सरस्वती अनुरागी गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर नवचेतन अम पगले प्रगटे आलस जड़ता त्यागी युग युग नांधार हरती नान जोत अहि जागी युग युग नांधार हरती नान जोत अहि जागी गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर ज्ञान तना निर्मल प्रकाश थी धर धर उज्जवल करशु सत्य प्रेम करुणा छलकावी स्वर्ग भूमि पद धरशु सत्य प्रेम करुणा छलकावी स्वर्ग भूमि पद धरशु गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर समाजनो उत्कर्ष साधवा हमें विद्या ने आराधी रहे न कोई दीन अकिंचन क्रूर दुष्ट हतभागी रहे न कोई दीन अकिंचन क्रूर दुष्ट हतभागी गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर यज्ञ दान तप कर्म हमारा शाश्वत रहे प्रकाशी धरा गुर्जरी मात भारती थाशे धन्य सुभागी धरा गुर्जरी मात भारती थाशे धन्य सुभागी गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर विवेक विद्या पराक्रम थी अंबर आंबीलैषु सुजलाम सुफलाम धरती माना चरणे जीवन धरषु सुजलाम सुफलाम धरती माना चरणे जीवन धरषु गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर Thank you everyone and wish you all a very happy Gita Jayanti. Thank you so much. I request the faculties to be seated here. The Center for Advanced Research Studies has planned the orientation program for research policies, incentives and initiatives for the faculties and students. So request all the faculties to be seated here for 15 minutes, please. Students may leave. Thank you so much.